Manpreet, recording start when? Okay. Yes, I'm audible now? Yes, sir. Okay. Now when you talk about the CPU, actually I'm talking about the microprocessor. Okay, and whenever you talk about the microprocessor, you are talking about the CPU. तो आपको ये जो दिख रहा है ना, this is a CPU. This is a CPU, Central Processing Unit. Now Central Processing Unit क्या करता है? It controls the actual flow of information and it carries out the operations. Whatever the operation we have to carry out, it is done in the CPU. It is done in the CPU. That is why the CPU is called as a brain of a computer. The CPU is called as a brain of a computer. Now, whenever you have to do some operations, okay, the operation is done in the central processing unit. So you can see here, I can say that central processing unit consists of what? It consists of number one, program counter. Number two, instruction register. Number three, registers. Number four, instruction decoder, timing and control unit. Number five, stack pointer. And number sixth, which is most important, arithmetic and logical unit, ALU. आप लोगों को पता है कि CPU के अंदर ALU होता है. So ALU is also the important part. ALU is also the important part. That is why ALU is also called as a heart of a CPU. Okay, it is called as a heart of a CPU. Now, I have told you that CPU is the brain of the computer, or it is a brain of a CPU, and your ALU is the heart of the CPU. Okay, try to understand this correlations. इसलिए मैं बता रहा था कि mark my words carefully. Now, whenever you have to understand the CPU, you have to understand these 6 blocks. We have to understand these 6 blocks in a proper way. We will go one by one because I am able to. जब मैं आपको CPU explain कर रहा हूँ, in other way, I'm explaining you the microprocessor. Okay, I'm explaining you the microprocessor. तो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि microprocessor क्या है, तो you will say, sir, it is a CPU. And if I ask you what is the CPU, you will say the CPU consists of 1, 2, 3, 4, 5, 6. If I ask you who is the brain of a computer, you will say, sir, CPU is the brain of a computer. Or in other words, you will say, sir, microprocessor is the brain of the computer. Okay, and then if I ask you, tell me who is the heart of a CPU, then you will say, sir, ALU, that is arithmetic and logical unit, is the heart of a CPU. So we will go one by one, try to understand each block. Program counter PC. Okay, program counter PC. ये सब हम आगे में सब पढ़ने वाले डिटेल में, but I have to explain you these blocks in brief. So program counter is what? Program counter, it contains address of the next instruction to be executed. This is important. Try to understand. When I talk about the program counter, और मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर नहीं समझ रहे तो मुझे you just stop me there. In short, it is said as a program counter PC. Now this program counter will contain the address of the next instruction to be executed. Okay, इसका मतलब क्या है? For example, मैंने suppose I have been asked to add 2 numbers, and to add these 2 numbers, I have written code, and the code consists of 5 lines. The code consists of 5 lines. 1, 2, 3, 4, 5. ये पूरे के पूरे 5 लाइन का कोड जब एग्जीक्यूट होता है, then I am getting the answer of addition of 2 numbers. So the problem statement given to me is to add 2 numbers, and for that I have written an instructions. Okay, for I have written a program. What do you mean by program? Program is nothing but the collection of instructions to execute a to perform a specific task. हमारा specific task क्या है? To add 2 numbers. So program क्या है? To add 2 numbers. So for that, how many lines, how many code I have written, how many instructions I have written? I have written 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Now this instruction will have some address. Okay, for example, if this instruction is at the address 1000 1000, then this instruction is at the address 1001. This instruction is at the address 1003. Suppose this instruction is at the address 1004. And this instruction is at the address 1005.
6. I am explaining the concept. I am explaining the making your foundation clear. Okay, you're making your basics clear. तो यहाँ पे अगर कुछ डाउट है तो पूछना जरूरी है. You cannot just go without understanding. If you go without understanding, then in future it will create problem. Okay, it will create problem. So try to understand this concept carefully now. So these instructions are at the specific address starting from 1000 and ending at 1006. Okay. Now ये प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? ये प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? ये प्रोग्राम काउंटर विल होल्ड द एड्रेसेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन. यानी ये प्रोग्राम काउंटर यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे रहेगा 100, बाद में यहाँ पे क्या रहेगा? 1001, यहाँ पे क्या रहेगा? 1003, यहाँ पे रहेगा 1004, यहाँ पे रहेगा 1006. ओके. तो प्रोग्राम काउंटर कंटेन्स एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड. सपोज ये पहला वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गया, तो आपके सीपीयू को कैसा पता चलेगा कि ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद यही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है? इट विल रेफर टू द प्रोग्राम काउंटर. तो प्रोग्राम काउंटर में देखो क्या है, पहले ये हुआ, यानी सीपीयू को पता चलेगा कि पहले मुझे ये एड्रेस पे जो इंस्ट्रक्शन है उसको एग्जीक्यूट करना है. बाद में फिर से पीसी के पास जाएगा, वो देखेगा, बाद में पता चलेगा कि 1001 पे जो एड्रेस है, सॉरी 1001 पे जो इंस्ट्रक्शन है, यानी 1001 इज द एड्रेस, और वो एड्रेस पे जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट करना है. बाद वो एग्जीक्यूट होने के बाद फिर से वो पीसी के पास जाएगा, बाद में फिर से देखेगा कि 1003 एड्रेस पे क्या है, तो 1003 पे ये इंस्ट्रक्शन है, ये एग्जीक्यूट करेगा. फिर से पीसी के पास जाएगा, देन अगेन इट विल चेक and so forth. It will complete all the execution of the instruction. In short, I will say it will execute the program. One by one. So program counter का क्या काम है? Program counter will hold the address of the next instruction to be executed. ये यहाँ पे लिखा है, contains address of the next instruction to be executed. Okay. तो प्रोग्राम काउंटर का साइज कितना होता है, ये सब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. नाउ दिस इज नॉट द टाइम टू एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग, जस्ट टू अंडरस्टैंड प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, उसका काम क्या है. इज इट फाइन टू एवरीवन? शैल आई प्रोसीड फर्दर? Yes, sir. हाँ, ये हो गया प्रोग्राम काउंटर के बारे में. अब रह गया है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर. एवरी टर्म इज इंपॉर्टेंट, यू कैनॉट इंटरचेंज द टर्म, यू कैनॉट रिप्लेस द टर्म. प्रोग्राम काउंटर तो प्रोग्राम काउंटर, पीसी. Instruction register बोले तो instruction register, that is IR. Okay. Now what is the function of instruction register? It contains binary code of instruction. Again, I will explain you this. Binary code contains binary code of an instruction. Okay. अभी instruction register है. Now register बोले तो it is a storage. Now when I talk about this IR will contain the binary code. For example, 10101, 11001, 10011, 1111. For example, I am giving you. It contains binary code of instruction. Let me make you one point clear. आपका जो instructions होते हैं, that instruction is available in program memory. It is available in program memory. It is also called as, suppose, ROM, read-only memory. Okay. Your data or your data is present at data memory, which is also called as a RAM. Again, take the same example. अगर मुझे दो नंबर को ऐड करना है तो मैंने बताया था I have written 5 instructions. Okay. ये जो इंस्ट्रक्शन मैंने लिखा है वो इंस्ट्रक्शन हमें पता है, या दैट इंस्ट्रक्शन वी नो. फॉर एग्जांपल, मुझे अगर दो नंबर को ऐड करना है, सो फॉर दैट आई हैव रिटन 5 इंस्ट्रक्शंस. सो ये इंस्ट्रक्शन, दिस इंस्ट्रक्शन is available in the form of your binary. ये इंस्ट्रक्शन
equivalent to this instruction इसका binary code is available in the program memory. इस instruction का equivalent binary code is available in the memory. It is available in the memory. For example, अगर मैं एक instruction लिख रहा हूँ, suppose add a, b, ये सब हम instruction पढ़ेंगे. add a, b, इसका मतलब क्या है? add रजिस्टर में जो कुछ नंबर है उसको मुझे बी रजिस्टर में जो कुछ नंबर है उसके साथ ऐड करना है. ओके, दिस इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है? द कंटेंट प्रेजेंट इन ए रजिस्टर हैज टू बी एडेड विद द कंटेंट प्रेजेंट इन बी रजिस्टर. अब ऐड a, b ये लैंग्वेज मुझे समझ में आती है, but your computer, your digital devices doesn't understand this add a, b. So this add a, b is having the equivalent binary code. So suppose for example 10001, 10001. Okay, 100. Sorry, एक काम करता हूँ मैं. Instead of writing down this 1001, I will write it down 10101, 10101. तो add a, b का equivalent मशीन लैंग्वेज कोड इज 10101. तो 10101 ये कहीं तो भी प्रोग्राम इसमें स्टोर होता है. तो प्रोग्राम मेमोरी कंटेन्स द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द इंस्ट्रक्शन. इट कंटेन्स द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द इंस्ट्रक्शन. यानी 10101 का मतलब है ऐड a, b. 10101 का मतलब है ऐड a, b. तो this 10101 is stored in the program memory. That is there in the program memory. तो 1010 का मतलब होता है कि add a, b, add a, b. अब ये जो मैंने 5 इंस्ट्रक्शन लिखा, तो पहला इंस्ट्रक्शन है सपोज add a, b, add a, b. ओके, सो दिस add a, b, ये add a, b का इक्विवेलेंट जो बाइनरी इंस्ट्रक्शन है 10101, ये प्रोग्राम मेमोरी में. तो ये प्रोग्राम मेमोरी में जो इसका इक्विवेलेंट है 10101 will be stored in the instruction register, will be stored in the instruction register. तो ये देखो 10101, यहाँ पे भी 10101 और यहाँ पे भी 10101. सिमिलरली अगर ये सेकंड इंस्ट्रक्शन है और सपोज ये सेकंड इंस्ट्रक्शन का इक्विवेलेंट बाइनरी लैंग्वेज है 11001, तो 11001 यहाँ पे कहीं पे तो भी रहेगा 11001, वो वहां से डायरेक्ट यहाँ पे आएगा. थर्ड इंस्ट्रक्शन सपोज बाइनरी इक्विवेलेंट है 10011, तो प्रोग्राम मेमोरी में वो कहीं भी तो रहेगा 10011, वो वहां से फिर यहाँ पे आएगा. सो कैन यू सी हियर, as per the instruction 1 2 3 4 5, your instruction register is also having the same binary equivalent of the instruction 1 2 3 4 and 5. ओके, तो ये जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है इसका काम होता है कंटेन्स बाइनरी कोड ऑफ इंस्ट्रक्शन. बाइनरी कोड ऑफ इंस्ट्रक्शन, आपने तो इंस्ट्रक्शन आपकी लैंग्वेज में लिखा, लेकिन इसका जो इक्विवेलेंट है, हर एक का इक्विवेलेंट जो है, ये बाइनरी ये जो बाइनरी कोड है ये आपके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आता है. कहां से आता है? इट कम्स फ्रॉम प्रोग्राम मेमोरी. इट कम्स फ्रॉम प्रोग्राम मेमोरी. नाउ कैन आई से योर प्रोग्राम मेमोरी is full of instruction binary code. Do you agree with this? Your program memory is full of instruction binary code. Okay, तो आपको जो भी कुछ परफॉर्म करना है उसका इंस्ट्रक्शन यहाँ पे है प्रोग्राम मेमोरी में. सिर्फ आपका क्या काम है, एक आपको सपोज सब्ट्रैक्शन किया 2 नंबर का, तो उसके हिसाब से इंस्ट्रक्शन लिखो और वही इंस्ट्रक्शन के जो इक्विवेलेंट बाइनरी कोड है वो आप प्रोग्राम मेमोरी से इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में ला के रख दो. तो ये पहला इंस्ट्रक्शन उसका इक्विवेलेंट, सेकंड इंस्ट्रक्शन उसका इक्विवेलेंट, थर्ड इंस्ट्रक्शन उसका इक्विवेलेंट, फोर्थ इंस्ट्रक्शन उसका इक्विवेलेंट, and so forth. I hope you have understood. If you have any question, please ask. Sir, if we have a program memory to store the binary code of instructions, then हाँ why do we use the instruction register? हाँ, see here, that is a good question. That is a good question. Now, if your CPU
मैं आपको सीपीयू पढ़ा रहा हूँ, उसमें से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ IR, ओके। और आपका जो मेमोरी, आपकी सीपीयू में मेमोरी है क्या? लेट मी आस्क यू दिस, वेदर योर सीपीयू हैज द मेमोरी। इसमें कहीं दिख रहा है मेमोरी है? इसमें कहीं दिख रही है मेमोरी है? नहीं। तो आपकी मेमोरी, प्रोग्राम मेमोरी बाहर है और आपकी डेटा मेमोरी बाहर है। तो ये आपकी प्रोग्राम मेमोरी और ये आपकी डेटा मेमोरी। तो आपके ये जो प्रोग्राम मेमोरी में विल कंटेन ऑल द इंस्ट्रक्शंस। तो हमेशा हमेशा वो इंस्ट्रक्शन वहां से लेना और आपके IR में डालना, ओके। सो it will take time because we are fetching the instruction from the program memory and then executing it will take time. So it's better, as per the instruction, all the required binary code will be put up in the instruction register. और अगर वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में रहेगा तो एक्सेसिंग जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने का टाइम है दैट विल बी रिड्यूस्ड। द प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने का टाइम दैट विल बी रिड्यूस्ड। और दूसरी बात ये भी है, आपके प्रोग्राम काउंटर में बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो मुझे सिर्फ अगर 2 नंबर को ऐड करना है तो 2 नंबर ऐड करने के लिए जितने इंस्ट्रक्शंस मुझे लगते हैं वही तो मैं वहां से ले लूंगा। मुझे बाकी की इंस्ट्रक्शंस की जरूरत नहीं है। I do not want the remaining instructions because they are of no use. मुझे अगर 2 नंबर को ऐड करना है and if I require 5 instructions, I will take those 5 instructions and I will store in the instruction register so that execution time will be reduced because your instruction register is in the CPU itself. और अगर हम हर बार प्रोग्राम मेमोरी से लेते रहेंगे, यानी एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ, फिर दूसरा हो गया, फिर तीसरा हुआ, और पहले इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के बाद ये जो सेकंड इंस्ट्रक्शन है फिर से आप यहाँ से लो, उससे अच्छा यू हैव टू ब्रिंग ऑल द इंस्ट्रक्शंस from the program memory to the instruction register and then executing in the CPU will be simpler and it will be faster. I hope you have understood now. Yes, sir. हाँ, तो हर बार प्रोग्राम मेमोरी से लेना इट विल टेक टाइम बिकॉज प्रोग्राम मेमोरी इज नॉट पार्ट ऑफ द सीपीयू। प्रोग्राम मेमोरी इज नॉट पार्ट ऑफ द सीपीयू, ओके। तो हमेशा वहां से लेना, एक्सेस टाइम ज्यादा लगता है, एक्सेसिंग टाइम विल बी मोर, एक्सेसिंग टाइम विल बी मोर। इसलिए उसको यहाँ पे लाके रखो और यहाँ पे परफॉर्म करो, ओके। मैं और एक चीज बोलना भूल गया। हाँ, तो ये जो ये जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो प्रोग्राम मेमोरी से लेते हैं। तो डेटा मेमोरी से हम क्या लेते हैं? डेटा मेमोरी में से हम डेटा लेते हैं। सपोज मुझे ऐड करना है 3+4, तो 3 और 4 कहाँ पे है? ये मेरे 3 और 4 डेटा मेमोरी में, 3 और 4 मेरा डेटा मेमोरी में। और वो भी एक बात है कि 3 और 4 डेटा मेमोरी में होते हैं, बट वो हमको, आई विल एक्सप्लेन दिस थिंग इन द अदर पार्ट ऑल्सो, जो मैं बाकी के जब ब्लॉक्स एक्सप्लेन करूंगा। तो डेटा मेमोरी में ये 3 और 4 होते हैं, तो यहाँ से हम यहाँ से तो लेते हैं, लेकिन ये 3 और 4 को यहाँ से लेके हम रजिस्टर में स्टोर करते हैं सीपीयू के, ताकि वहां पे भी एक्सेसिंग टाइम कम हो जाए। सो वी विल सी दैट थिंग। सो यहाँ पे मुझे एक बात बताना है कि द डेटा इज स्टोर्ड इन द डेटा मेमोरी, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन binary code are stored in the program memory, okay. And as per the instructions, your instruction register will contain all the binary code of instructions, all the binary code of the instruction। all binary code बोले तो 1 2 3 4 5 यही रहेंगे, okay। So that is the meaning। so I have explained you about the program counter, I have explained you about instruction register. Now we will move towards the register. Now register is simple. What is the definition given to the register? Temporary and intermediate storage of information. वहां पे fast लिखा है, fast is important. Now let me give the same example. मुझे अगर 3 और 4 को ऐड करना है, 3 और 4 को ऐड करना है, so it's better I write the data in the register. So आपका ये जो डेटा मेमोरी है सपोज, तो ये 3 और 4 जो है ना, उसको आप लाके रजिस्टर में रख दो, okay। So here try to understand the function of register. Register is the temporary and temporary storage of the data. Register is a temporary and intermediate storage of the information. Let me take an example. If you want to add 4 plus 5, which will give me 9,
So 4 and 5 is in, suppose it is in my data memory, I will bring them from data memory to the register. वही same reason है. यहाँ से अगर मैं लूंगा और डायरेक्ट परफॉर्म करूंगा तो it is taking more time. So it's better I bring from this data memory and I store in the register. So 4 और 5 यहाँ पे आ गए. Then आपका एडिशन करने का काम कौन करता है? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट. तो ये अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट will perform 4 plus 5 and the answer is 9 is again stored in the register. So can I say 4 and 5 are my are my source and 9 is my destination, or that is the final output. So your register is responsible to hold the source data as well as the result. Okay, and why it is called as fast? Because ALU can fetch the data from the register, क्योंकि register is a part of a CPU. अगर वही चीज अगर ये यहाँ से लेंगे और परफॉर्म करेंगे तो इट विल टेक टाइम. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ फास्ट. तो पहले डेटा यहाँ पे लाके रखो रजिस्टर में, सो दैट ALU यहाँ से तुरंत ले लेगा, परफॉर्म करेंगे ऑपरेशन, और आंसर जो रिजल्ट है वो भी यहाँ पे जाके स्टोर कर देंगे. हाँ, आपको अगर लगता है कि रिजल्ट मुझे बाद में स्टोर करना है डेटा मेमोरी में, तो आप बाद में कर सकते हो. ये भी करने के लिए यू हैव टू राइट डाउन स्पेशल इंस्ट्रक्शन. You have to write down special register. Otherwise, your result is temporarily stored in the register. I hope you have understood the function of register now. Any question? Any question? Am I audible? Yes, sir. Okay. So if you don't have questions, we will proceed to the next one. So I have explained you now register. Now we will be talking about instruction decoder, timing and control unit. This is also important. Instruction decoder, timing and control unit. See the definition. See the definition. Decodes the instruction and takes the necessary action to execute it. Decodes the instruction and takes the necessary action to execute it. That is why it is called as an instruction decoder. Okay, वही same वही बात. If these are the 5 instructions, okay, so these instructions has to be decoded into binary code. These instructions has to be decoded. That is called as interpretation. या फिर instead of saying in this manner, I will do one thing that will be more simpler for you. Now suppose instructions are written, again same five instructions. These instructions, you know, these instructions will be encoded into binary code. Okay, binary code. This is called as encoding. ये encoding पहले से होती है. Okay, and that encoding binary code will be stored in the ROM, लेकिन जब हम ROM में से as per the instruction 1 2 3 4 5, तो हर एक के रेस्पेक्टिव बाइनरी कोड जब हम वहां से लेके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जब डालते हैं, और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में से फिर हमको उसको डिकोड करना पड़ता है, तो वो डिकोड करने का काम इंस्ट्रक्शन डिकोडर करता है. इसका मतलब क्या है? सपोज ये इंस्ट्रक्शन है, इसका बाइनरी कोड वही है, सपोज 10011, ये हमने यहाँ पे लाके रख दिया इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में. ओके, नाउ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लाके रख दिया, बट आई डू नॉट नो द इंटरप्रिटेशन ऑफ 10011. सो इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस 10011, या फिर आप बोलोगे डिकोडिंग ऑफ दिस 10011 इज डन इन द इंस्ट्रक्शन डिकोडर. It decodes because instruction is encoded and then it has to be decoded. So decoding will be done by the instruction decoder, timing and control unit. Okay, so decodes the instruction and takes the necessary action to execute it. And takes the necessary action का क्या मतलब होता है?
जब मैं इसको डिकोड करूंगा तभी मुझे पता चलेगा कि एक्चुअली मुझे क्या करना है। 10011 का क्या मतलब है, दैट इज कॉल्ड एज डिकोडिंग। और डिकोडिंग समझने के बाद ही मुझे पता चलेगा कि एक्चुअली फिर मुझे क्या करना है। सो आई विल बी टेकिंग द नेसेसरी एक्शन टू एग्जीक्यूट दैट इंस्ट्रक्शन, टू एग्जीक्यूट दैट इंस्ट्रक्शन। ओके, सो 10011 का एक्चुअल मतलब क्या होता है, ये काम कौन करता है, इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, and timing and control unit. So timing and control unit is also important. Okay, so let me read out this for you. Let me read out this for you. I will better read out, you'll be able to see this. Yes, here. Yes, instruction, can you see here, instruction decoder and control unit, instruction decoder and control unit. See here, the instruction decoder interprets the instruction present in the instruction register, and control unit determines the sequence of operation that should be performed to complete the task specified by an instruction. Control unit also provides timing to all operations. The control unit provides the inputs for the ALU either from register or memory, decides the operation to be performed, and makes sure that the result is written to the proper location, register or memory. इसका मतलब वही है, सपोज मैंने 5 इंस्ट्रक्शन लिखे हैं, हर एक इंस्ट्रक्शन को डिकोड करने का काम है इंस्ट्रक्शन डिकोडर का। और कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है, सपोज एक मैंने ऐसे इंस्ट्रक्शन लिखा कि वो इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि डेटा मेमोरी में से लेके आओ, डेटा मेमोरी में से लेके आओ। So the control, can you see, the control unit provides the input for the ALU either from register or memory. एक मेरा इंस्ट्रक्शन, थर्ड वाला इंस्ट्रक्शन ऐसा लिखा मैंने कि मुझे डेटा मेमोरी में से लेके आना। ओके, अगर एक इंस्ट्रक्शन मैंने ऐसे लिखा है कि डेटा मुझे रजिस्टर से लेके आना है, तो मेमोरी से लेके आना है या फिर रजिस्टर से लेके आना है, ये सब कंट्रोल यूनिट बताता है, कंट्रोल यूनिट। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कंट्रोल यूनिट. Control unit is responsible whether you are reading the data from the memory or from the register, or you are writing the data into the memory or register. Now there are two terms, reading or writing, reading or writing. Okay, reading the data from the memory or the register and giving to the ALU, or getting the data from the ALU and writing into the register or memory. So these are the two different things. So I can say control unit can perform reading operation or writing operation, reading operation or writing operation. So you have understood what do you mean by reading, what do you mean by writing. Okay, reading and writing in the memory or from the memory, reading and writing from the register or from into the register. Okay, so इंस्ट्रक्शन डिकोडर विल डिकोड एज वेल एज कंट्रोल यूनिट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज वो बताता है कि आपको रीड करना है, राइट करना है इनटू द डेटा, इनटू द मेमोरी और इनटू द रजिस्टर। और एक यहाँ पे था टाइमिंग, टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट। रिगार्डिंग द टाइमिंग, कैन यू सी हियर, कंट्रोल यूनिट आल्सो प्रोवाइड्स टाइमिंग टू ऑल ऑपरेशंस। यानी एक इंस्ट्रक्शन मैंने सपोज लिखा है, ये इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करने को कितना टाइम लगता है, सो दैट इज कंट्रोल्ड बाय द टाइमिंग यूनिट, that is controlled by the timing unit. Okay, suppose 1 2 3 4 5 instructions है, इसको कुछ टाइम लगेगा, suppose it takes 2 microsecond, this instruction will take suppose 3 microseconds, this instruction will take suppose 1 microsecond. So depending upon the instruction, it totally depends upon the instruction कि वो instruction क्या आपने क्या लिखा है। ओके, क्या लिखा है, suppose अगर ये instruction आपने लिखा है जिस instruction में आपको डेटा मेमोरी से लेके आना है, so it will take more time. वही अगर सेकेंड इंस्ट्रक्शन आपने लिखा है डेटा आपको रजिस्टर से लेके आना है, देन दिस विल टेक लेस टाइम. तो इंस्ट्रक्शन फेचिंग फ्रॉम द मेमोरी सपोज इट रिक्वायर्स 2 microseconds, and instruction data taking from the register it will take 1 microsecond. Okay, so decision is purely based upon the type of instruction, and that is controlled by the timing unit. That is controlled by the timing unit. I hope you have understood this.
मेरे एक्सप्लेनेशन होने के बाद प्लीज रेफर, दिस इज द बुक फ्रॉम Manish Patel, which already I have shared in the classroom. Is it fine? Shall I proceed further? Yes, sir. Is it fine? Okay. So we have talked about the other block, that is instruction decoder, timing and control unit. I am requesting everyone to revise, क्योंकि don't rely upon the class only. मैं यहाँ पे सिखाता हूँ, I try my level best to explain you the concept, but unless and until you do the revision, it will be in vain. Okay, तो please मेरा होने के बाद एक revision लो. Okay, and I am explaining you all the basics, very important concepts. ये एक बार clear हुआ तो you will be able to understand. So we have seen that one. Now we will proceed to understand stack pointer. तो ये स्टैक पॉइंटर के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे. स्टैक पॉइंटर के लिए अगर मुझे बताना है तो मैं इतना ही बताऊंगा, यूज टू सेव डेटा टेम्पररी. स्टैक पॉइंटर के लिए हम मैं अलग से आपको बताऊंगा. ओके, so just for time being you understand it is used to save data temporarily. Yes, then the last one, it is simple, it performs arithmetic and logical operation. Okay, it performs arithmetic and logical operation. And one sentence I have given for the ALU, that this is the heart of your CPU. ये आपका CPU है और उसका हार्ट यहाँ पे है, उसका दिल यहाँ पे. Okay, so please remember that ALU performs your arithmetic and logical operation. Shall I proceed further now? Any question in the CPU? Any question in the CPU? Any question in the CPU? No, sir. Any query? Okay, ठीक है, we will proceed now. Once this is explained, now let me show you the block diagram. Is my slide visible to everyone? Yes. Yes, sir. Okay. Yes, here now, please pay attention. Now you have to concentrate on this particular block diagram. Okay. ये ऊपर का छोड़ दो, क्या लिखा है वो छोड़ दो, क्या लिखा है. Okay. Now if I ask you to identify the CPU, can any one of you tell me where is the CPU? Where is the CPU? In this block diagram, where is the CPU? Answer fast. General purpose microprocessor. हाँ, ये वाला CPU है. So can I say this is a CPU? Can I say this is nothing but the microprocessor? Yes or no? Yes or no? Yes or no? Yes. Yes, Yes. sir. Yes. Sir. So your CPU is the microprocessor, and now you imagine that to carry out any general purpose work, to carry out any general purpose task, आपका सिर्फ माइक्रोप्रोसेसर रहने से काम हो चलेगा क्या? आपका सिर्फ माइक्रोप्रोसेसर या फिर आपका सिर्फ सीपीयू रहने से काम चलने वाला है क्या? नहीं, क्योंकि अभी हमने देखा है प्रोग्राम मेमोरी, डेटा मेमोरी, उसका भी इंपॉर्टेंस है. ओके, सो कैन यू just imagine that your CPU or microprocessor will not work alone. It has to take the help of RAM. It has to take the help of ROM. It has to take the help of IO ports. It has to take the help of timer, and it has to take the help of serial communication port. You have understood the RAM.
that is a data memory. You have understood the ROM, that is a program memory. What do you mean by IO port? IO port means nothing but you require monitor, you require display, you require keyboard, you require mouse, you require mouse. So can I say these are nothing but IO ports? Yes or no? Yes or no? Yes, sir. Yes. हम इनपुट कहाँ से देंगे? हमको इंस्ट्रक्शंस लिखना है, हम इंस्ट्रक्शंस कहाँ पे देंगे? हम इंस्ट्रक्शन कहाँ पे देखेंगे, कहाँ पे लिखेंगे? So for that you require IO port. You require IO port. Then timer. To carry out any specific task operation, the timer is required. Serial port. मुझे डेटा ट्रांसफर करना है तो पैरेलल पोर्ट या सीरियल पोर्ट के थ्रू मैं ट्रांसफर करूंगा. ओके ओके. सो यू हैव टू इमेजिन, कल ही मैंने आपको बताया था, व्हाट यू हैव टू इमेजिन नाउ, यू हैव टू इमेजिन this as a motherboard. In this motherboard you have a microprocessor शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं MUP, माइक्रोप्रोसेसर is nothing but your CPU, और CPU के अंदर you have an ALU. This motherboard contains your microprocessor or your CPU, and in the CPU you have ALU. ये रहने से काम नहीं चलेगा. Other than that, you require RAM, you require ROM, you require IO ports. So for IO ports, you have a connection. Okay, and RAM slot and ROM slot is available on the motherboard. It is available on the motherboard. Now, don't you think that this becomes a total general purpose microprocessor board? Yes or no? Yes or no? Yes or no? Yes, sir. Yes. तो आपका माइक्रोप्रोसेसर अलग अकेले काम नहीं कर सकता, उसको रैम, रोम, टाइमर, देन योर सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट जो हमने वहां पे देखा था, एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड. आपका आईओ पोर्ट के लिए आप अलग से कनेक्शन लगाओगे. ये सपोज ये माउस को लगाओगे, ये मॉनिटर को लगाओगे. ओके, सो दिस मदरबोर्ड contains all the required peripheral components. Now अब ये जब सब रहेगा तब जाके ये प्रॉपर जनरल पर्पस काम करेंगे. ओके, तब जाके ये काम करेंगे. ओके, so here we have to understand that your microprocessor will not work alone. Your microprocessor will not work alone. Yes, your microprocessor will not work alone, but it requires all these other peripheral components. Okay, now here, if you talk about the computer, the CPU for a computer, and commonly no RAM, ROM, IO, and on CPU chip itself. Okay, then you will be only left with the microprocessor. तो माइक्रोप्रोसेसर अलग से काम नहीं कर सकता, उसको ये बाकी चीज लगती है. अब अगर यही चीजें मैं आपको अगर अलग से बताऊं, now this thing if I tell you, then you see here now. If a single IC or a single chip contains, if a single chip contains what? If it contains, see here now, if it contains CPU, if it contains RAM, if it contains ROM, if it contains IO port, if it contains timer, if it contains serial port, communication port, this everything on a single chip, then it is called as a microcontroller. Now, I hope you have understood the difference between the microprocessor and the microcontroller. Your microprocessor is the part of microcontroller because CPU is the part of a microcontroller. And we have just now told that CPU is nothing but the microprocessor. Okay? और माइक्रोप्रोसेसर अलग से काम नहीं करेगा तो उसके लिए हमको अलग से लगाना पड़ता है. ये भी मैंने आपको बताया. हमको अलग से लगाना पड़ता है. क्या लगाना पड़ता है?
रैम रोम ये सब चीजें अलग से लगानी पड़ती है, लेकिन माइक्रो कंप्यूटर में ऐसा नहीं है, सॉरी माइक्रो कंट्रोलर में ऐसा नहीं है। माइक्रो कंट्रोलर में ये सभी चीजें एक सिंगल चिप पे है, ये सभी चीजें एक सिंगल चिप पे है, ये सभी चीजें एक सिंगल चिप पे है। A single chip will have everything. So a chip containing all the CPU, RAM, ROM, IO port, timer, serial communication port, then it is called as a microcontroller. Then it is called as a microcontroller. Now, I hope you have understood the difference between the microprocessor and microcontroller. Any question, please ask. Any question, please ask. Any question, any doubt? Yes or no? No, sir. No, Okay. sir. No, sir. So we have understood the difference between microprocessor and microcontroller. Okay. So these are the differences. These are the differences. I want everyone to go through this. Okay. सबसे important difference पहला वाला point है. A CPU is standalone. RAM, ROM, IO, timer are separate. Are separate. Microcontroller में क्या है? CPU, RAM, ROM, IO and timer are all on a single chip. Are all on a single chip. Okay. Second, designer can decide on the amount of ROM, RAM and IO port because वो मुझे अलग से लगाना है. यहाँ पे fixed amount of on chip ROM, RAM, IO port. Okay. This is expensive. This is for application in which cost, power and space are critical. So the rest of the things you can just go through this. Okay. The rest of the things you can just go through this, which will give you a broader difference between the microprocessor and microcontroller. The main difference is this. ये अगर समझ में आए तो बाकी की चीजें समझ में आएंगी. लो पावर है, ये है, वो है. Now just to give you an example, ये जो एक्सपेंसिव है, दिस इज नॉट सो एक्सपेंसिव. द रीजन बीइंग, सिर्फ आप जब माइक्रो प्रोसेसर की जब बात करते हो, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू. आई वांट एवरीवन टू प्लीज लिसन प्रॉपर्ली जो मैं बता रहा हूँ. Now whenever you talk about the microprocessor is responsible to carry out the multitasking. Take an example of your laptop. Take an example of your desktop computer. Your laptop or desktop computer will perform multitasking. तो लैपटॉप और माइक्रो डेस्कटॉप कंप्यूटर में यू हैव अ प्रोसेसर. आप नहीं बोलते हो कि मेरे लैपटॉप में माइक्रो कंट्रोलर है, आप बोलते हो कि मेरे लैपटॉप में प्रोसेसर है. मैं जब पूछता हूँ कितने टेल मी द स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रोसेसर, देन यू विल से कितना गीगाहर्ट्ज का है, ओके, एंड कितने कोर का है, कौन से जनरेशन का है. So all the time you talk about in terms of processor. Nowhere you will say कि मेरे लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर में माइक्रो कंट्रोलर. You have a processor in your laptop because you have to perform multitasking. You have to perform multitasking. But when you come to the microcontroller is a gadget specific. Microcontroller का एक specific काम दिया assign किया जाता है. Microcontroller is present in the washing machine, it is present in the oven, it is present in the AC, it is present in the refrigerator. In your all the home appliances, you will say microcontroller is present because microcontroller का काम है specific task करना. उसका काम है specific काम करना. उसका काम है specific काम करना. ओके, इसलिए जितना काम है उतना आपको रॉम आप उसमें फिक्स्ड अमाउंट कर सकते हो, फिक्स अमाउंट का रैम कर सकते हो, बिकॉज द टास्क इज प्री डिफाइंड. द टास्क इज प्री डिफाइंड. लेकिन माइक्रो प्रोसेसर में ऐसा होता है नहीं. द टास्क इज नॉट प्री डिफाइंड. इट इज अ मल्टीटास्किंग. इट इज अ मल्टीटास्किंग. दैट इज व्हाई इट इज एक्सपेंसिव as you compare with the microcontroller. Therefore it is expensive because microcontroller is gadget specific. It is application oriented. It is specific application oriented. Okay, as compared with the microprocessor. Okay, as compared with the microprocessor. Okay, so even why it is less expensive, because you will get RAM, ROM, everything of a fixed amount on a single chip, because we have to do some specific task only.
अब वॉशिंग मशीन का क्या टास्क है, आप टाइमर लगाओ, एक मोड सेट कर दो, देन खत्म। एसी का वही काम है, रेफ्रिजरेटर का वही काम है। बट इफ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ अ लैपटॉप, okay, you open many tabs, you perform many applications, okay, simultaneously. So to carry out all this you require microprocessor. स्पीड अगर ज्यादा बढ़ाना है तो रैम आपको बढ़ाना पड़ता है, ओके, आपको रोम बढ़ाना पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन आपका रिक्वायरमेंट। आपको अगर लैपटॉप गेमिंग के लिए चाहिए तो उसका कॉन्फ़िगरेशन अलग से होता है। कम रैम में आप गेमिंग नहीं कर सकते हो, ओके। So in that case, sometimes you require graphic cards. So what I mean to say that these are all additional things required to carry out multitasking, which is not there in the microcontroller. Any question, please ask. Any question, please ask. Yes or no? No, sir. No, sir. Okay. Your lecture is at 11:10, na? Yes, sir. Okay. So I have talked about this different components now. Again, I'm repeating, please read this. Please read this. Okay. So before I go, let me complete the memory. It will take more 5 minutes, then we will go. Okay. अगर हम मेमोरी की बात करते हैं, मैंने आपको बताया था, see what is written here. The memory is used to store data. The memory is used to store the data and binary instructions. To store the data, you have RAM. To store the binary instructions, you have a ROM. Okay. And see the memory. See the memory. So your memory will contain different memory locations. So these are the memory locations: 1, 2, 3, 4, and so forth. Okay. So if there are n memory locations, so for every location there is address. Can you see your address? Address 0. For this you have address 1. So if there are n address memory location, then you have total n addresses. Starting from address 0 to address n minus 1. Address n minus 1. इसका मतलब जो लास्ट वाला मेमोरी लोकेशन है वो एड्रेस n है, okay, address n है. Now you assume this memory as a data, or you assume this as a ROM. You assume this as a data memory, or you assume as a ROM. अब मुझे बात बताओ, ये मेमोरी लोकेशन मुझे एक्सेस करना है तो I should know the address. So if I know the address, this address 1 will be going through the address bus. अब next class में I will be talking about what do you mean by system bus. System bus क्या होता है? ये देखो system bus यहाँ पे मैंने I need to explain you. Yes, here. Yes, can you see a system bus? Okay, so this is actually the bus. For transportation के लिए बस यूज करते हो यहाँ से वहां जाने के लिए. So यहाँ पे भी वही काम है, ये बस ही है. तो this system bus comprises of 3 types. One is called as address bus, second is called as a data bus, and third one is called as a control bus. Please remember this. I will be taking this in detail in the next lecture. So your system bus is actually the bus which carries address, then it is called as address bus. If the bus carries data, then it called as a data bus, and if that carries control, then it called as a control bus. Data bus वाले लोग एड्रेस बस से नहीं जा सकते, एड्रेस बस वाले लोग डेटा बस में नहीं जा सकते, कंट्रोल वाले एड्रेस में नहीं, एड्रेस वाले कंट्रोल में नहीं. हर एक का अलग अलग बसेस होता है, उसी बस में जाना पड़ता है, उसी बस में ट्रैवल करना पड़ता है. ओके, सो
This address bus, data bus, and control bus we'll be talking about in the next lecture. Okay, and ये address, data bus और control bus का क्या importance है as far as the memory is concerned? Yes, as far as the memory is concerned, we will see. Okay, because ये memory आपको जो देख रही है, मैंने आपको बताया था कि you can treat this memory as a data memory or the program memory. But if you see carefully, can you see your address bus? Can you see your data bus? And can you see your control signals, which is nothing but control bus? तो ये तीनों का importance है as far as memory is concerned. So in the next lecture, we will talk about these three buses and the relation with the memory Again, I'm repeating, please revise whatever I am explaining in the class, in the lecture. Is it fine? Any questions? Shall we stop for today? Yes. Shall we Yes, stop sir. for today? Okay. Attendance हो गया क्या मनप्रीत? Yes, sir. Yes, sir. Okay. If you don't have any questions, you can leave. Thank you. We will see tomorrow in the next lecture. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Bye-bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir.